Students, welcome to all of you. This is Fahad Bhatti from STARS. Students, today we will discuss circular cases of distance and displacement, that how can we calculate distance and displacement in a quarter circle, in a semicircle, 3/4 of circle and in a complete circle. स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है s इज़ इक्वल टू 2πr/360 टाइम्स थीटा, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है दैट इज़ द एक्चुअल एंगल and the formula of displacement is d equals √2 times 1 minus cos of theta. लेकिन स्टूडेंट इस केस में द एंगल इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल. स्टूडेंट्स, हमारे पास चारों केसेस जैसे ही हम एंगल्स पुट करेंगे 90, 180, 270 and 364 distance, so these are the results. In case of displacement, shortest possible angle is 90, 180, again 90 as 0, and student, these are the results of displacements.